सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं तो उसमें है बैक्टीरिया, ओके, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बट प्रायर गोइंग टू बैक्टीरिया हमें थोड़ा माइक्रोस्कोपिक टेक्निक देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक टेक्निक फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, माइक्रो तो हमें पता है कि दे आर वेरी स्मॉल, नॉट सीन बाय द नेकेड आई, एंड दैट्स व्हाई we use a specific instrument, and that instrument is nothing but the microscope. तो फिर क्या है माइक्रोस्कोप? ये जनरली आपको पता है कि इट्स अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन पर्पस, लेकिन फिर इसमें बहुत सारी इसमें इसकी भी एक हिस्ट्री है, तो शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री देखना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप आर देयर, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ओके। तो फिर हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम यहाँ पर 5 हेड में जनरली स्टडी करने वाले हैं, जिसमें कि 2-3 हेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फंगा, बैक्टीरिया एंड वायरस, ओके। सो क्या हर बैक्टीरिया एक तरीके की एक ही तरीके के माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा? और फिर माइक्रोस्कोप में दिखने के लिए जो स्पेसिमेन बनता है, वो स्पेसिमेन बनाने की बहुत सारी अलग-अलग टेक्निक्स, राइट, ओके। सो what are the different method for preparation of that particular specimen so that better और बहुत ज्यादा अच्छा better visualization आपको वहां पर मिल सके, and you are going to see the internal structure even in body, okay. So for that purpose there are various type of the microscopic techniques, तो ये microscopic techniques हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। then in that particular microscopic technique, bright field microscopy है, dark field microscopy है, fluorescence microscopy है, phase contrast microscopy है, ये अलग-अलग टेक्निक्स हमने यूज की, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइट में अच्छे से दिखते थे, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डार्क में अच्छे से दिखने लगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी का उसके ऊपर कॉम्बिनेशन किया और फिर उसका विजुअलाइजेशन किया, तो कुछ फेस कॉन्ट्रास्ट, यानी अगर some microorganisms are eliminating light, so background हमें क्या करना पड़ेगा, डार्क रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से किस तरीके से हम बेटर एंड बेटर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, इसकी तरफ हम उस पर्टिकुलर मेथड में देखेंगे। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट और डिस्कवरी, इसके एक्चुअल में ये डिस्कवरी होने के बाद में फिर माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स में दे, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, and there are two different techniques in that particular electron microscope, okay, SEM and TEM, okay, transmission electron microscopy and scanning electron microscopy, okay. So electron microscope जब develop हुआ, see there is some limitation in that particular phase contrast microscopy, bright field microscopy, dark field microscopy, okay, but ये इसकी जो लिमिटेशंस थी, इस लिमिटेशंस का रेंज जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए बहुत ही वाइड है। Suppose in that particular bright field microscopy या light microscopic technique जो थी, उसमें अगर हम 100 टाइम या 200 टाइम या 1000 टाइम अगर उसका मैग्निफिकेशन कर सकते थे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करके we are going to magnify that image up to lakhs, okay, 1 lakh, यानी इतना भी अगर पार्टिकल रहेगा उसको आप 1 lakh टाइम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। So even the cell and the internal structure of that particular cell we are able to visualize due to that particular electron microscopic technique, and results are very sound. So ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिया, उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच बहुत वाइडली बढ़ा। सो अराउंड देखते हैं कि इन दी 20th सेंचुरी, अराउंड 1940 के बाद से जो डेवलपमेंट हुआ, पर्टिकुलरली 90s या 1950 या उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी का ब्रांच हर एक फील्ड के साथ में कोलैबोरेट, ओके। सो माइक्रोस्कोपी को हमने एग्रीकल्चर में यूज किया, माइक्रोबायोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ में जोड़ा। अभी इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, तो कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो उस टेबल में नहीं है, वो इवेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे पहले, ठीक है। सो वी नो टुडे वी नो दैट इन द सॉइल, so to maintain the fertility of that soil and for the proper growth of the plant, okay, there are some microorganisms present in the soil, and these microorganisms are very much helpful for the growth of that particular plant, okay. तो हम एक नाम सबने सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, right? There are some bacteria which are present in the soil and they actually fixes the nitrogen from the atmosphere into the soil, okay,
and usually plant take that nitrogen from the soil और plant की growth के लिए nitrogen बहुत important। ओके, तो फिर यहाँ पर वो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कौन यूज हो रहा है? दैट इज द बैक्टीरिया। ओके, सो in that way microbiology is concerned with that, is it incorporated in that particular agriculture field, so हम crop का production बढ़ा सकें, राइट। उसके बाद में फर्मेंटेशन का जब प्रोसेस एस्टैब्लिश हुआ, तो we know that today we know that in that fermentation process also there is what we can say that importance of microorganism. Due to that microorganism there is a fermentation process happens, right? So that ये fermentation process को किस तरीके से स्केल अप करके हम इंडस्ट्रियल इसके लिए यूज कर सकें, so that मास क्वांटिटी में हम चीज बटर इस तरीके के बहुत सारे चीजों का मास प्रोडक्शन करके उसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज मैन्युफैक्चरिंग यूज कर सकते हैं, राइट। इन दैट वे इंडस्ट्रियल परकोलेशन हो गया आपकी माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच का। ओके, उसके बाद में देयर आर सेवरल डिसीजेस, there are so many diseases in plant and due to that diseases the production is get lower। अभी हम आज भी देखते हैं कि आप सबने सबके यहाँ किसी न किसी फॉर्म में आप एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होंगे, तो there are lots of diseases in that particular crop or on that particular plant is over। okay, generally गोदिया वगैरह में हम देखते हैं कि राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो बहुत सारे ऐसे हम डिसीजेस देखते हैं जिसकी वजह से टोटल फसलें बर्बाद हैं। ओके, सो if there is a disease in that particular plant, it indicates that disease in that particular cell, in that particular kingdom planting, okay, and that disease causing microorganism जो कोश ने जो postulate दिया था, right? कोश ने क्या postulate दिया? The कोश tells us that each and every disease is caused by specific microorganism. It indicates that microorganism is critically involved in that particular disease process, right? तो फिर plant में भी जो disease हो रहा है, it is due to microorganism। अब microorganism क्या है? Whether it is bacteria, whether it is virus, whether it is protozoa or what? Okay, तो उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसका ट्रीटमेंट करके क्रॉप का अल्टीमेटली प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो these are the few what we can say that different widening horizon करके टाइटल दिया हुआ है आपके इसमें। let me share my screen। ठीक है, यहाँ तक जो हुआ है उसको एक थोड़ा सा स्लाइड को रन कर लेते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज व्हिच इंक्लूड, ये पांचों चीजों के नाम डाल देने के, दैट इज बैक्टीरिया, फंगा, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। एंड वायरसेस क्या है? दिस आर द इन्फेक्शियस एजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ। उसके बाद भी कंसर्न विद देयर फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड classification, and it includes the study of their distribution in nature, relationship with each other and to other living organisms, effect on human beings and other animal and plants, ability to make the physical and chemical changes in our environment, and reaction in physical and chemical agents, right? उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से अलग-अलग फॉर्म है, पर्टिकुलरली माइक्रोबायोलॉजी को किस तरीके से प्लेस किया है। उसके बाद में हमने देखा कि क्यों फेवरेबल है ये स्टडी के लिए, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस सभी इसमें सेम होती है। ये इकोनॉमिक है, रैपिड ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें आइडेंटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है इसमें हमारे में और प्लांट्स में और एनिमल्स में, और वाइड रेंज ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल पोटेंशियलिटीज। ओके, उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से इसका ये हुआ अकॉर्डिंग टू एनर्जी यूटिलाइजेशन, किस तरीके से इसको प्लेस किया गया, और फिर ये देखा गया कि फिजिकल पैरामीटर अगर हम चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर और बाकी जेनेटिक पैटर्न के ऊपर अल्टीमेटली चेंज हो जाता है। ओके, क्लियर। नाउ दिस इज द व्हाट वी कैन से दैट माइक्रोबायोलॉजी में हम लिविंग तो देखते हैं, साथ ही साथ में नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे देखते हैं व्हिच आर एबल टू कॉज इन्फेक्शन। ओके, तो क्या वो चीजें थी जो असेलुलर फॉर्म में है, जो एग्जैक्टली सेल नहीं है, बट some part of cell is present over there and they are able to cause infection. So these are the viruses, viroids, satellites and prions. So virus is composed of protein and nucleic acid, viroids composed of RNA, satellite composed of nucleic acid and often RNA, and prions are the proteins. Okay, and these are the cellular component, ये हमें पता ही। Okay, then
डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और ये डिफरेंसेस को हमने एक 4 से 6 इसमें बांटा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट वन दैट इज किस तरीके से इसको ग्रुप किया गया है, देन साइज रेंज क्या है, तो दिस इज द पर्टिकुलर साइज रेंज 1 to 2 by 1 to 4 micrometer or less, and eukaryotic cell greater than 5 micrometer. ओके, देन जेनेटिक सिस्टम, यानी अंदर से बाहर की तरफ आए थे हम, तो हमने देखा था व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड व्हाट इज द सेक्सुअलिटी. ओके, then cytoplasmic nature and structure, so what is present in that particular cytoplasm, ये हमने देखा था. तो हमने न्यूक्लियस को छोड़ के अभी और बाहर जा रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमने ऑल ऑर्गेनेल्स का कंपैरिजन कर लिया था. इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि सभी चीजें जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, सिर्फ प्रेजेंट क्या है, तो गैस वैक्यूल्स और मेसोसोम्स, जो इस पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, राइट. और राइबोसोम के बारे में था कि 70S in prokaryotic cell and 80S in eukaryotic cell, as well as 70S is present in eukaryotic cell, but it is 70S is present in mitochondria and cytoplasm. Okay, everyone please concentrate on this. Now उसके बाद में हम ऑर्गेनेल्स पे आए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस मिला हमको कि दैट इज इसकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस थे. तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल और लोकोमोटर ऑर्गेनेली, सूडोपोडिया, इसमें हमें क्या मिला है, यहाँ पर डिफरेंसेस मिला है. ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल वॉल का कंस्टिट्यूएंट है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकान इज अ कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल. पेप्टिडोग्लाइकान को हम म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड, ओके, और ये पेप्टिडोग्लाइकान जो है वो यूकैरियोटिक सेल में नहीं है. ओके, देन मेटाबॉलिक मैकेनिज्म देखा था हमने, और डीएनए बेस्ड रिसोर्स जो था 28 to 73 in prokaryotic cell and about 14 in eukaryotic cell. So this is the particular division, right. उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे इनके, क्लियर. उसके बाद में हमने देखा था कि किस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इसमें किस ईरा में इसका एग्जिस्टेंस आया. उसके बाद में हमने देखा था कि देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. हमने कल भी डिस्कस किया था कि कार्ल डिस्कवर्ड द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, दैट्स द बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकार्या. उसके बाद में हैकेल ने थर्ड किंगडम दिया, दैट इज प्रोटिस्ट, एंड इट डिवाइडेड इनटू द लोअर प्रोटिस्ट एंड हायर प्रोटिस्ट. तो लोअर प्रोटिस्ट में बैक्टीरिया को रखा उसने, ओके. हायर प्रोटिस्ट में जो यूकैरियोटिक ये थे एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगा एंड उसको, ओके. देन इसका डिस्कवरी जब हुआ था, तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवरी हुआ तब इसको बहुत ही रिफाइंड तरीके से प्लेस कर दिया गया. ओके, देन देयर आर सेवरल सबडिविजन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ ओवर देयर. ओके, देन इसका कंपैरिजन देखा था हमने कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन दी ऑल दी 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हमने उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ में उसको डिस्कस किया. ओके, देन हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. ओके, सो देयर आर प्रोमिनेंट डिफरेंस, और इसमें हमने देखा था कि सूडो पेप्टिडोग्लाइकान और पेप्टिडोग्लाइकान में क्या डिफरेंस है. ओके, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. ओके, देन नेक्स्ट, सो दिस इज द पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन पेप्टिडोग्लाइकान एंड सूडो पेप्टिडोग्लाइकान. ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये पर्टिकुलरली कर्सर दिख रहा है अगर आपको, तो बाकी सारी चीजें सेम है. ओके, सिर्फ यहाँ पर एन, वेयर इज कर्सर, जस्ट हाँ, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड इन पेप्टिडोग्लाइकान, but in the pseudo-peptidoglycan N-acetyl glucosamine and N-acetyl transminoleic acid. तो ये एक वहां पे डिफरेंस. ओके, देन डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हमने देखा था. ओके, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. सो साइनोबैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया व्हिच आर कैपेबल ऑफ doing photosynthesis, so they are able to use the radiant energy and manufacture their own food. ओके, so ये डिफरेंस देखे थे हमने. उसके बाद में हम आते हैं कि दे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम सिस्टम. तो इनिशियली जो था वहां पर 2 किंगडम सिस्टम थे, प्लांट एंड एनिमल, ये 2 ही किंगडम थे. लेकिन फिर इन पर्टिकुलर 4 to 5 पॉइंट्स के ऊपर 5 अलग-अलग किंगडम्स दे दिए गए, राइट. दैट इज टाइप ऑफ सेल के ऊपर से प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डिवीजन किया हमने. देन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर है, तो प्रोकैरियोटिक इज ऑलवेज यूनिसेलुलर. ओके, ये मल्टीसेलुलर इसमें नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल जब एक साथ दिखते हैं तो वो क्लब दिखता है हमको, और हम बोल सकते हैं इसकी यूनिसेलुलर टाइप दिख रहा है, लेकिन इट्स
not unicellular always. Okay, ये sorry, it is not multicellular always. हमेशा वो unicellular रहेगा और ऐसा जो ग्रुप है इसको बोलते हैं मोनेरा. Then protista, that is unicellular eukaryotic cell, it contain. And next one, that is the cell wall is present or absent. तो cell wall is अगर present है तो वो प्लांट या फंगाई में जाएगा और सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमेलिया में रहेगा, राइट. और अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांट, और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं कर रहा है तो दैट इज द फंगाई. सो दिस इज द 5 human system: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंगाई. Okay, so it is given by R.H. Whitaker in the 1969. Sometime year is also important. Okay, तो इसमें देखा आपने कि 3 किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Okay, that is Monera, Protista and fungi. Okay, then these are the some divisions for the better study. Okay, for the better understanding of that particular subject. So Burgess manual of systematic bacteriology में 4 division में particularly bacteria को बांट दिया. Bacillus, which contain complex cell walls, that is gram negative bacteria. Gram negative bacteria में पेप्टिडोग्लाइकान की जो लेयर होती है वो छोटी होती है और वहां पे एडिशनल एक कोट होता है which gives the additional protection to that particular bacteria, and the infection caused by this bacteria is very difficult to treat. Okay, then next division, that is Firmicutes. सिंपल सेल वॉल रहेगा यहाँ पर जिसको इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आएंगे. एंड देन लास्ट टू थर्ड डिवीजन 3. अब यहाँ पर डिवीजन का ये चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है. ऐसा भी पूछा गया है क्वेश्चन एक बार कि Firmicute belongs to which division or Mendocicutes belong to which division. Okay, so Gracilicute, Firmicute, Tenericute and Mendocicute. Tenericutes without cell wall and Mendocicute is the progeny of first and second, to be intermediate link. Okay, then there are different branches of microbiology. If we study the bacteria, if we study the protozoa, if we study the algae, fungi, virus and fungi, तो इसके अलग-अलग डिविजन्स हैं वहां पर. उसके नाम यहाँ पर ध्यान में रखने हैं आपको. बैक्टीरियोलॉजी फॉर बैक्टीरिया, प्रोटोजोलॉजी फॉर प्रोटोजोआ, पैरासिटोलॉजी. ओके, पैरासिटोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी. पैरासिटोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ प्रोटोजोलॉजी, ऐसा हम बोल सकते हैं, बिकॉज़ पैरासिटोलॉजी इट डील्स स्पेसिफिकली विद द डिसीज कॉजिंग प्रोटोजोआ एंड देयर आर सेवरल प्रोटोजोआ व्हिच आर नॉट डिसीज कॉजिंग. ओके, तो प्रोटोजोलॉजी की एक सब ब्रांच दैट इज द पैरासिटोलॉजी. तो ये सिर्फ ऐसे प्रोटोजोआ के बारे में डील करता है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, जस्ट लाइक मलेरिया डिसीज. ओके, then mycology deals with the fungi, virology deals with the viruses, and phycology it deals with the algae. Okay, so myco ध्यान में रखना है fungi के साथ में, phyco that is the algae. बाकी तो नेम से आ रहा है. Okay, then हमने ये characteristics देख लिए थे. Just इसको बार-बार आंखों के सामने से जाने लीजिए. ओके, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके इसमें आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें. ओके, तो साइज रेंज आपको कंपैरेटिवली ध्यान में रखना है. उसके बाद में किसका कल्चरिंग आपके लेबोरेटरी में हो सकता है, किसका कल्चरिंग लेबोरेटरी में नहीं हो सकता. तो ध्यान में रखिएगा कि वायरसेस के लिए लाइव सेल लगेगा और इसलिए आर्टिफिशियल न्यूक्लिएट मीडियम में हम उसको ग्रो नहीं कर सकते. एंड देयर इज ऑलवेज गुड इफेक्ट एंड बैड इफेक्ट ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म. ओके, तो हम बैड इफेक्ट से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, गुड इफेक्ट इस तरीके से हम एनहांस कर रहे हैं. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर table. Okay, then these are the few fields of applied microbiology. So if we apply the knowledge of microbiology in the medical field, aquatic field, astronomic field, food, agriculture, industry. Okay, so इस तरीके से अलग-अलग fields को इसका क्या किया गया है, इसके साथ में combine करके वहाँ पे microbiology का importance यहाँ पे दिखाया गया है. Okay, then some historical events like Robert Hooke, who discovered the cell, then cell theory is given by the Sheldon and Swan. Okay, Waxman इसने streptomycin का जो ये बनाया था. Streptomycin is the antibiotic secreted by the soil bacterium. Carolus Linus इन्होंने plant और animalia ये 2 kingdom दिए थे. Okay, then Haeckel ने तीसरा kingdom दिया और Vidal test for typhoid and Wasserman test for syphilis is discovered by this particular Vidal and Wasserman. Okay, then Roger Bacon, Girolamo Fracastoro, Anthony Van Clensis, इस पे हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, लगभग ये हिस्टोरिकल इवेंट्स पे और ये शायद ये सेशन आपका ऑनलाइन होने के चांसेस अभी 50-50 है, इसलिए इनको बार-बार आप देखिए. ओके, Roger Bacon, Girolamo Fracastoro and Anthony Van Clensis postulated that disease is produced by invisible living creatures.
राइट। देन पिक्चर इन्होंने बताया कि इनविजिबल, उन्होंने उस इनविजिबल क्रिएचर्स को वर्म नाम। Okay, and is the first person to recognize the significance of bacteria and other microbes in disease. Okay, then Virgil का contribution है कि artificial propagation of bees. Then Ignaz Philipp, इन्होंने he was the pioneer of use of antiseptic in obstetric practice. ठीक है, जो सिजरीन होता है उसमें, और pure culture was at first time obtained by Joseph Lister. Okay, then what is pure culture? इसके बारे में हमने देखा था कि the growth of mass of cell of same species, that is the pure culture. Okay, so culture that consists of only single kind of microorganism, no other different microorganism is present over there. That particular culture is nothing but the pure culture. Okay, or colony, isolated growth of organism is known as colonies. Okay, then ये कुछ historical events हमने देखे थे कि what is the main contribution of different scientists in that particular field. Okay, तो हमने देखा कि बहुत पहले से इसका ये हुआ, कुछ डिस्कवरीज 18th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में हुई, कुछ डिस्कवरी 17th में, लेकिन यहाँ पे इवेंट्स जैसे आप देखेंगे तो जैसे जैसे आगे आगे दौर जाते जा रहा है, देखिए आप यहाँ पर कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे वहां पे इन्वेंशंस हुए, बहुत सारी फाइंडिंग्स वहां पर हुई। ओके, इसमें लिस्टर, लुइस पास्चर, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है 19th सेंचुरी में बहुत सारी डिस्कवरीज करने। ओके, तो ये टेबल को अच्छे से आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद में 19th सेंचुरी के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि माइक्रोबायोलॉजी, जो हम यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में मैंने डिस्कशन किया कि दे परकोलेट द नॉलेज ऑफ दैट माइक्रोबायोलॉजी इनटू एवरी फील्ड। ओके, अब हमने देखा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्वड, क्रिटिकली इन्वॉल्वड एवरीवेयर। वॉक्समैन ने ये बताया था कि कोई भी फील्ड ऐसी अनटच्ड नहीं है जहां पर माइक्रोऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ओके, तो यहाँ पर फिर बहुत सारी डिस्कवरीज 20th सेंचुरी में, 19 जब खत्म हुआ, स्टार्टिंग हुआ, तो वहां पर बहुत सारी नई नई उसका वाइडनिंग हुआ, वाइडनिंग हॉरिजॉन के इसमें उसको दिया गया है। ओके, सो सी दैट इवेंट, दैट इज Walter Reed reported the transmission of yellow fever by mosquito. Okay, then Waxman introduced complement fixation test for syphilis. Then Benjamin utilizes the principle of enrichment culture, confirmed finding of first virus. तो ये एक्चुअली वायरस इन्होंने प्लांट के अंदर देखा था। Okay, and first time he identified that particular virus. So there are lot of what we can say that discoveries are there which are enlisted in that particular table. Okay, ये एक्सपेरिमेंटेशन को हमने कल डिस्कस किया था और बताया था कि क्यों ऐसा हुआ कि ये पर्टिकुलरली जो हेन है वो यहाँ पर जिंदा है और ये हेन क्यों मर गए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं है और इसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी है, क्योंकि यहाँ पर जो 8 वीक ओल्ड कल्चर था उसकी उसकी क्या डिस्ट्रॉय हो गई और क्या एज इट इज थी, कोई बताएगा? टॉक्सिसिटी इज डिस्ट्रॉयड, इट इज डिस्ट्रॉयड एंड एंटीजन। हाँ, राइट। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि टॉक्सिसिटी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टोटली इज गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कम हो सकती है, और इस लेवल पे आ गई कि वहां पर उसका डेथ ना, राइट? ओके, सो यहाँ पर उसको एज इट इज रूम टेम्परेचर पे स्टोर करने के बाद उसकी टॉक्सिसिटी जा रही है, लेकिन ये हो सकता है कि किसी प्योर कल्चर की टॉक्सिसिटी कुछ ट्रीटमेंट के बाद जाए, एज इट इज वैसा रखने के बाद में नहीं जाए। ओके, तो ये बहुत ही जबरदस्त फाइंडिंग थी, एंड दिस फाइंडिंग इज एक्सीडेंटल फाइंडिंग। ओके, पास्चर ने एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया था। ओके, और यहाँ पर जब उसने फ्रेश कल्चर इनकॉर्पोरेट किया और वो मर गई, तब उसको लगा कि इसमें तो वायरस है, लेकिन जब उसने ओल्ड ये इनकॉर्पोरेट किया तो वहां पर नहीं मरी, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी ये थी। और फिर उसने एक्सपेरिमेंटेशंस किए और उसके बाद में लोगों को ये डेमोंस्ट्रेट करके बताया कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस। ओके, सो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को भी जानने के लिए, राइट? ओके, सो टॉक्सिसिटी इज गेट कॉम्प्रोमाइज्ड बट एंटीबॉडी उससे प्रोड्यूस हो गई, और नेक्स्ट टाइम जब ये इनोकुलम यहाँ पे आया तो एंटीबॉडी ऑलरेडी थी,
ओके यहाँ पर ये एंटीबॉडी ऑलरेडी इसमें थी, एंटीबॉडी थी तो जैसे ही वो प्योर कल्चर का डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको टॉक्सिक इफेक्ट शो वहां पर नहीं हुआ। ओके देन ऐसा ही एक्सपेरिमेंटेशन किसके ऊपर किया उन्होंने, अब ये हो गया यहाँ पर दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज अबाउट बैक्टीरिया। नाउ व्हाट अबाउट वायरस, तो एक्चुअली डॉग के सलाया में रेबीज वायरस, ओके और रेबीज वायरस का इन्फेक्शन जिसको हो गया इज सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया, ठीक है। अभी आपने ऐसा पेशेंट देखा है नहीं देखा है पता नहीं, बट मैंने अपने लाइफ टाइम में ऐसा एक पेशेंट देखा है। एट दैट टाइम ये इतना ये नहीं हुआ था, अभी तो हम डॉग्स को वैक्सीनेटेड करा देते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर रेबीज वायरस, बट इन nowadays also in the villages वैक्सीनेशन डॉग्स का नहीं होता है। ओके सो इसकी एक हिस्ट्री भी दी हुई है, आप अगर बुक में पढ़ेंगे टेंशन में तो बहुत अच्छी हिस्ट्री दी हुई है वहां पर। ओके सो in that particular dog saliva there is a virus that is the rabies virus, and that rabies virus if it get inserted inside the human body due to bite, और ये rabies virus सिर्फ डॉग में नहीं, वुल्फ में, कैट में, इसमें भी रहता है। ओके तो अगर if that rabies virus by somehow by dog bite, bone bite, rat bite, if it get inserted inside the human body and it survive in the human body and it replicate in the human body, and as their number is getting increases a person is suffering from hydrophobia। okay hydrophobia means डर लगेगा पानी से। तो आपने नोट किया होगा इसको, डॉग को हाइड्रोफोबिया, डॉग खड़ा है आप उसके ऊपर पानी डालिए भाग जाएगा, राइट। सो दैट इज द हाइड्रोफोबिया, डर है वाटर्स। ओके so might be there are some persons also suffering from this particular hydrophobia or they have hydrophobia, but it's not, it's a psychological thing। okay उसको इससे रिलेट नहीं करना। so इन्होंने क्या किया कि डॉग से वो डॉग के सलाइवा से रैबिस ये लिया, उसका सलाइवा उसको इंजेक्ट किया रैबिट में एंड रैबिट इसके डाई। ओके सो बेसिकली मैंने जो पेशेंट देखा था उसमें ये सिम्टम्स थे कि that particular girl, I think around 5 to 6 year girl, no even बड़ी ही ज्यादा 7 से 8 साल की लड़की। so after bite उन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, और ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से that rabies virus get replicated inside the body of that girl and she rigorously means एक स्टेज पर ऐसी हो पहुंच गई कि literally she behaved like a dog। okay तो डॉग के जैसे भौंकना या इवन उस तरीके का बिहेवियर इसमें किसी किसी पेशेंट्स में आ जाता है। ओके लेटर ऑन उस लड़की का डेथ। ओके सो इन दैट पर्टिकुलर केस अब इस तरीके का जो बिहेवियर है ये ना साइकोलॉजी यानी अल्टीमेटली यहाँ पर किस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है आपके नर्वस सिस्टम, राइट। ओके so ultimately that virus get accessed into the nervous system in the brain and spinal cord, and accordingly वहां पे वो changes करके उस तरीके के behavioral changes वहां पर हमें दिखते हैं। ultimately अगर patient is left get untreated then ultimately it get die। okay so यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि rabbit का brain और spinal cord लिया और उसको extract किया। so extract the brain and spinal cord, ओके वहां उसका एक्सट्रैक्शन लिया, उसके फ्लूइड को अटेन्यूएट किया। तो अटेन्यूएट करते समय उन्होंने बहुत सारे इसके साथ में ट्रीटमेंट किया, उसको हीट किया, रेडिएशन से ट्रीट किया। ओके ऐसे बहुत सारे उसमें अटेन्यूएशंस किए एंड देन ही इंजेक्टेड इनटू द what we can say that into the fresh animal and that animal is not get died। ओके एक इसका हिस्ट्री जब बताया है इन्होंने कि one person that is नाम बोल रहा हूँ मैं यार नहीं, एक नाम दिया है इसमें एरिक ऐसा कुछ तो भी नाम है। सो दैट पर्सन उसको बाइट कर दिया था वुल्फ ने, वाइल्ड वुल्फ। सो देयर इज अ नो होप कि उसके सर्वाइवल का कोई होप नहीं है। तो फिर उन्होंने उस पर्टिकुलर इसको पास्चर को दिया कि आप इसके ऊपर अपना ये एक्सपेरिमेंटेशन ट्राई करें। सो ये जो पर्सन यहाँ पे दिया है ये पर्सन बोर्ड। ओके सो इज द फर्स्ट पर्सन हु सर्वाइव्ड। ओके I forgot the name, just मिचेल या ऐसा कुछ नाम है उसका। ओके
सो उसके घर वालों ने कोई बुक थी नहीं, तो एक बुक करके पास्टर को ये दिया, जो पास्टर ये क्लेम कर रहे थे दैट इज पर्टिकुलरली मैं इसको बचा सकता हूँ करके, तो उन्होंने दिया कि देखिए आप ट्राई कीजिए इसको, तो क्लिनिकल ट्रायल का केस हो गया है। ओके, सो पास्टर has already done the experimentation on rabbit, but first time he inject that particular attenuated pure culture into the that particular person, and that person is get survive. Okay, और फिर यहाँ से अल्टीमेटली वैक्सीनेशन के इसको बहुत ज्यादा घुमाया, और फिर बहुत सारे डिस्कवरीज वहां पर आगे हुई। ओके, so these are the post postulate that specific microorganism can always be found in association with the given disease. An organism can be isolated and grown in pure culture in the laboratory, and pure culture will produce disease when inoculated into the susceptible animal. Okay, and it is possible to recover the organism in pure culture from the experimentally infected animal, जो इस particular experimentation में हमको दिख रहा है। Okay, then हाँ, widening horizon. Okay, so medical microbiology में हम इसका ये कर सकते हैं phototoxins, antitoxin, phagocytosis, chemotherapy, diagnostic test, antiseptic surgical practices में। Agriculture, industrial and food microbiology, तो यहाँ पर विलोग्रास्की करके साइंटिस्ट थे, उनका बहुत इम्पोर्टेंट ये बताया, उन्होंने बताया कि there are nitrogen fixing bacteria is present in this soil. Okay, so he is the first person जिन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया कि बैक्टीरिया इज रिस्पांसिबल फॉर दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड दिस बैक्टीरिया फिक्सेस द नाइट्रोजन, दे जस्ट टेक अप द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और उसको वो अलग कंपाउंड के साथ में कंबाइन करते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस वहां पे क्या होता है, कैरिड आउट होता है। ओके, then microbiological and modern biology, so molecular biology जो है exactly किस तरीके से चेंजेस वहां पर होते हैं सेल के अंदर, इट इज गिवन बाय दैट पर्टिकुलर साल्वेटर इन यूरिया। एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड सोसाइटी, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि हम इस लेवल तक अभी हमारा स्टडी हो चुका है, साइंस इस लेवल तक ये हो चुका है कि हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करके या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू हम पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने में अभी कर सकते हैं। ओके, so apart from that there are certain events which I am going to highlight, so just note down some events. So after partial and coach, okay, इनके जो findings थी, these findings are mainly applicable, mainly upgraded or inculcated into the agriculture and industry. Okay, तो फिर एग्रीकल्चर में सबसे पहला जो काम किया गया था, जो अभी हमने नाम लिया था, दैट इज वीरोग्रास। ओके, सो इन दी 1800, ओके, इन्होंने क्या किया कि this gives the importance of bacteria, visible importance of bacteria in nitrogen fixation. ओके, तो ये थोड़ा नोट कर लेंगे, दो इवेंट्स है कि importance of bacteria in taking nitrogen from the atmosphere and making it available to the plant. Okay, so that particular bacteria taking nitrogen from atmosphere and combines it with the other ingredient present in the soil and combines with other component and making it available. Okay, so making it available for जो भी आप क्रॉप लेंगे, जो भी आप ये लेंगे, to plant. Okay, so this is the first what we can say that
साइंटिस्ट विनोग्रास्की, और उनका बहुत यूजुअल कंट्रीब्यूशन है आपके माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच में एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ओके, देन इसके बाद में फिर डिस्कवरीज होते रही बहुत सारी। तो एक दूसरा और नाम है हेलरिजन एंड विल्फार्ट। Okay, so this Helvegen and Wilfar in the year 1901, okay, they are given the mutualism concept, that is symbiotic association. और आज हमें पता है symbiotic association के बारे में. Yes, anybody? What is symbiotic association? Yes. Symbiotic association. Lichen. Yes. Lichen. Lichen. Association of fungus and algae. नहीं, okay, but what is actually symbiotic association? What does it mean? Profitable association of two organisms for food Right. and shelter. Right. So एक एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में अगर हम लेते हैं, ह्यूमन बॉडी का कोई एग्जांपल बता सकेंगे हम? Methanogenic bacterial association in intestine. Right, definitely. So there are several bacteria is present in the gut, and they get food from our body, and they supply some beneficial what we can say that substances, some beneficial components to us. They secrete some neurotransmitter, they secrete some chemicals, okay, and they secrete some short chain fatty acid. तो fatty acid हमने biochemistry में पढ़ा है. Even that short chain fatty acid fatty acid is secreted by these particular microorganisms. तो हमारी बॉडी में उनको फूड शेल्टर मिल रहा है, और हम उन्हें क्या दे रहे हैं? फूड शेल्टर दे रहे हैं, और वो हमें क्या दे रहे हैं? यूजफुल components, useful substances. Okay, so this is one of the mutual benefit combination. Okay, so that is symbiotic association is nothing but both the species are get benefited over there. Okay, so this association is proven by these two particular scientists. Okay, symbiotic association of bacteria and leguminous plant. Okay. Just symbiotic association between bacteria and leguminous plant, and leguminous plant like alfalfa and clover. Okay, so then in that particular leguminous plant there is a presence of bacteria, which are nitrogen fixed bacteria. So bacteria get food in that particular plant, and they give the nitrogen to that particular plant for their growth. Okay, so this is another discovery. Then Bijarin. ओके, ये आपके टेबल में भी है इसका, लेकिन वहां पर अलग डिस्कवरी के लिए उसका इंपॉर्टेंस है. Here they identified the first bacteria, that's Azotobacter. Azotobacter, and this Azotobacter is the nitrogen fixing bacteria. Okay, so Azotobacter, that is the free living nitrogen fixing bacterium. Okay, to and this is very important to maintain the soil fertility. Okay, so it promotes the soil fertility, and it's important in the soil fertility is given by that particular this scientist. Okay, free living nitrogen fixing bacteria to promote soil fertility. Okay, fine. So these are the three different scientists given about the knowledge about the nitrogen fixation system, bacteria, and different plant their association. Okay, then the next scientist who has given the
importance of this microorganism in the industrial fermentation, right? Okay, so this particular Emil Hansen, note down, Emil Hansen Emil Hansen क्या लिखेंगे आप? इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन. His contribution is in the industrial fermentation. So what they actually their contribution is like that. They given the importance of pure culture of yeast and bacteria in the vinegar manufacture. Okay, so उसके आगे लिखेंगे pure culture of yeast and bacteria. Okay, for vinegar manufacturing. Okay, for vinegar manufacturing. And this pure culture they call it as starter. इस pure culture को क्या बोला उन्होंने? Starter. Okay. So this starting material, this pure culture का definition आपको पता है कि in that pure culture only one species of microorganism is present over there, and these microorganism is particularly act as a starter, and they utilizes that particular thing, and they are able to carry out these particularly manufacturing of vinegar. Okay, so this is particular thing. Then next sentence, that is adamants. Okay, so use of pure culture in cheese manufacturing. Use of pure culture in cheese manufacturing. Vinegar manufacturing के लिए इनका नाम है cheese manufacturing. This scientist, and next scientist, that is the corn and wheat man. Okay, so use of pure culture for butter production. And nowadays we see that these products are generally we use them around, right? So this mass production is possible due to that particular fermentation process, and these are the scientists who given the importance of pure culture bacteria in that particular production. Okay, इसके बाद में कुछ दो तीन इवेंट है उसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए. ब्यूरिन, ये तीन चीजों के लिए ध्यान रखना अच्छे से fermentation केस and father of fermentation. Okay, then ब्यूरिन. So this scientist given the idea about bacterial infection, that is fire blight. अब यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी विद बॉटनी एमबी. ओके, अभी तक हमने देखा माइक्रोबायोलॉजी with respect to agriculture, microbiology with respect to particularly industry. Now microbiology with respect to agriculture ही आएगा यहाँ पर, especially botany and plant. So what are the different causative agents for different crops or different plants? So this beauty identified that is fire blight. Fire blight है एक आपने देखा होगा कि काफी पेड़ के पत्ते से सूख जाते हैं, जैसे जल जाते हैं. That's like fire blight. Okay, so this fire blight is the bacterial infection. First time identified that particular scientist, Bury. Okay, so this fire blight of bacterial, which is a bacterial infection, Okay, so ultimately Bury gives the idea about plant
pathology. Okay, now note down the next scientist. 4 scientists बचे हैं यहाँ पे, 4 scientists का contribution. That's Mayer. Okay, so this Mayer, mottling or mottling disease. Mottling disease ये first time बताया किसने? Mayer. Okay, mottling disease of tobacco plant. इनिशियली टोबैको कंजम्पशन इंडिया में काफी ज्यादा, इसका प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा था, तो वहां पर उसके पत्तों के ऊपर ये डिसीज था. ठीक है, दैट इज ये भी उसी तरह लिखा है कि उसके पत्तों को कुछ तो भी ये करता है. दैट इज मॉटलिंग. ओके, सो दिस मॉटलिंग डिसीज ऑफ टोबैको. ओके, एंड इट इज आइडेंटिफाइड बाय दैट पर्टिकुलर मेयर. एंड उन्होंने ये बताया कि दिस मॉटलिंग डिसीज का जो पॉजिटिव एजेंट है, इट इज ट्रांसफर्म्ड बाय द प्लांट सैप. ओके, तो ये अल्टीमेटली एक से दूसरे को इस तरीके से वहां पर ट्रांसमिशन होगा. ओके, नाउ अब प्लांट के अंदर ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा डिसीज का. तो प्लांट के अंदर दो चीजें हमें ध्यान में रखना है कि प्लांट के अंदर इस तरह दो तरीके के ज्यादा इन्फेक्शन की चांस है, बैक्टीरियल और वायरल, जैसे हमारे साथ. ओके, नाउ दिस इन्फेक्शियस एजेंट, whether it is bacteria, whether it is virus, एक तो ये एक से दूसरे को हो सकता है, एक प्लांट होगा, फिर वहां से वो अल्टीमेटली किसी न किसी एजेंसी से एक बैक्टीरिया या वायरस दूसरे प्लांट के ऊपर गया, फिर उसको हुआ, फिर इस तरीके से, यानी एक बार यहाँ लगा तो फिर पूरे इसको घेर लिया. इट्स लाइक दैट. देयर आर सर्टेन साइंटिस्ट्स जिसने डिस्कवर किया कि दिस इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट. अब ये इंसेक्ट यहाँ पे बैठा है, वायरस या बैक्टीरिया उसके बॉडी में चले गया. ओके, और फिर ये वायरस उस वो इंसेक्ट फिर दूर जाकर के दूसरे प्लांट के ऊपर बैठा और वो वायरस वहां पे डिप्लॉय. सो replication of that virus inside that particular insect is carried out over there. Okay, and transmission is carried out. Okay, तो इसमें दो इवेंट लिख लीजिए. और Smith peach yellow. ओके, तो ये आपने देखा होगा, अगर आप खेती में कभी गए हैं तो पत्ता पीला हो जाता है. ठीक है, स्पेशली करपा, खोड़कीड़ा, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे कभी, अगर आपका कांटेक्ट आया होगा तो. ओके, तो यही सारे डिसीजेस के बारे में यहाँ पर लिखी है, पिच एलो. ओके, सो इट इज द ट्रांसमिटेड बाय बडी. ओके, हेल्दी प्लांट से बडिंग के थ्रू ही ट्रांसफर हो जाएगा आपके. इसमें डिस्कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट स्मिथ. देन Ivanovsky, plant disease by virus. Ivanovsky, plant disease by virus. Okay, just main words लिख रहे हैं. Then Hashimoto, also Hashimoto ने और 3 साइंटिस्ट ने मिलकर एक्सपेरिमेंटेशन किया था. बॉल, एडम्स एंड शॉ. बॉल, एडम्स एंड शॉ इंडिपेंडेंटली इन्होंने एक जगह एक्सपेरिमेंटेशन किया. इन्होंने मिलकर एक जगह एक्सपेरिमेंट किया इंडिविजुअली. And what they identified that viral transmission by insect. Okay, so they identified the viral, जो अभी हमने डिस्कस किया, transmission by insects. Okay, so virus is transmitted from one plant to the another plant with the agency of insect, and even these viruses are grown inside the insect. Okay, so it is given by the Hashimoto as well as इन्होंने मिलकर एक्सपेरिमेंटेशन किया था और फिर इसको अराउंड 1907 में. ओके, एंड देन लास्ट जिसके लिए सो इसके आगे लिख सकते हैं आप यहाँ पर वायरस
virus lives in the insect. Okay, virus lives in the insect and replicate over there. Okay, and the last, that is Stanley and Northrop, who got Nobel Prize for their discovery in the 1946, और इन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, ओके, इसका फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किया था, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली उन्होंने आइडेंटिफाई किया. ओके, so crystalline structure of this TMV, tobacco mosaic virus, was first time, ये पहला ऐसा वायरस है जिसका crystalline structure आइडेंटिफाई करने में साइंटिस्ट को सक्सेस मिला है, and that scientist is this Stanley and Northrop. Okay, so इस डिस्कवरी के लिए ये पहला ऐसा वायरस था जिसका crystalline structure साइंटिस्ट ने दिया, and for the discovery they got the Nobel Prize. Okay, so tobacco mosaic virus isolate in crystalline form. Isolate in crystalline form. Okay, so these are some important events. Okay, जो historical इसमें apart from that जो आपको टेबल है उसके अलावा ये कुछ events है, इसको थोड़ा नोट करके रखें. Okay.